Hey guys, welcome to another lecture from Introductory Statistics. We have started talking about probability from the previous lecture. Now, continuing with the same concept. In probability, it's very important for us to review set theory because invariably, what are we doing in probability? Probability theory uses the language of sets. Hence, we must review set theory before we jump on to questions dealing with probability. गेटिंग डीपर इनटू इट सो सेट थ्योरी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए देखिए सी वी नीड टू नो द नोटेशंस वी नीड टू नो डेफिनेशंस एंड वी नीड टू नो द ऑपरेशंस सो व्हाट इज अ सेट सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अब वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एनी काइंड ऑफ कलेक्शन सो यहां पर क्या हो जाएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी कलेक्शन ऑफ आउटकम्स जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें से जो भी आउटकम्स निकल के आ रहे हैं कलेक्शन ऑफ आउटकम्स सेट ही तो बनेगा कोई ना कोई फॉर एग्जाम्पल एनी इवेंट दैट वी टेक इट्स अ सेट फॉर एग्जाम्पल सैंपल स्पेस भी तो सेट है सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इवेंट क्या है उसमें वन और मोर देन वन आउटकम्स होंगे ठीक है अब बात आ जाती है और क्या चीजें हमें चाहिए व्हेन वी आर वर्किंग ऑन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सेट थ्योरी हाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी वुड रिक्वायर all kind of notations and all kind of sets we should know about. Complement. What is complement of a set? मान लीजिए A is the set that we are talking about. What is its complement? The complement of any event A. Let's talk in terms of event because ultimately हम तो अभी probability की बात कर रहे हैं, right? So the complement of an event A is denoted by A dash, A prime. आप कॉम्प्लीमेंट के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी इट इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस दैट आर नॉट इन ए जस्ट द यूजुअल डेफिनेशन बस इवेंट के तौर पे आ गई यहां पर नेक्स्ट व्हाट वी शुड डिस्कस अबाउट यूनियन एंड इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूनियन ऑफ टू सेट्स और मोर देन टू सेट्स फॉर दैट मैटर यूनियन क्या होता है व्हेन यू हैव एलिमेंट्स इन ए और बी और सी ऐसे करके आपका यूनियन बनता है यूनियन मीन्स यूर यूनाइटिंग ऑल द सेट्स सो इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स व्हाट विल इट बी द यूनियन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी डिनोटेड like the way you denote in set theory A union B and it's read as A or B. This event consists of all the outcomes that are either in A or in B or in both the events. So this is very important. All outcomes that are in at least one of the events. Okay. दैट इज व्हाट इज यूनियन अब ऐसे आ जाएगा इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन क्या होता है सेट थ्योरी में हमें पता ही है इंटरसेक्शन इज बेसिकली व्हाट्स इन ए एंड इन बी इन बोथ देन वी से कि वो ए इंटरसेक्शन बी में है सो इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय दिस symbol the inverted U symbol read as A and B is the event consisting of all outcomes that are in A and B. अब अगर मान लीजिए हम A और A complement देखें A consists of whatever outcomes A complement has all the outcomes that are not in A. तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन आ जाती है अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें अगर हम इन दोनों का यूनियन देखें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट तो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ जाती है इफ आई टेक एवरीथिंग इन ए यूनाइटेड विद एवरीथिंग दैट्स नॉट इन ए वो क्या देगा मुझे द इंटायर सैंपल स्पेस बिकॉज एवरीथिंग दैट्स नॉट इन ए इज बीइंग यूनाइटेड बाय व्हाट्स इन ए तो पूरा सैंपल स्पेस ही तो बन जाएगा भाई राइट इंटरसेक्शन के बारे में अभी हम दोबारा से बात करेंगे इंटरसेक्शन के बारे में अभी हम दोबारा से बात करेंगे Let's quickly take a couple of examples here. Suppose your experiment is number of pumps that are used at a single 6-pump gas station. If that number is observed. मतलब आपका एक गैस स्टेशन है वहां पे 6 लाइन्स हैं 6 पंप्स है
एंड हाउ मेनी एट द सेम टाइम आर बीइंग यूज्ड, वो अगर हम ऑब्जर्व करके नंबर लिख रहे हैं. सपोज ए इज द सेट 0 1 2 3 4, दैट मीन्स 0 यूज हो रहा है, 1 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 4 यूज हो रहे हैं. सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इज वट एवर इज नॉट इन ए. तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी 5 and 6. 5 and 6 यूज नहीं हो रहे हैं, राइट? सो नंबर ऑफ pumps used in a single 6 pump gas station, in case it is event B, I define 3 4 5 6. मतलब 3 यूज हो रहा है, 4 यूज हो रहा है, 5 यूज हो रहा है, 6 यूज हो रहा है. सो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि दैट मीन्स if I look into B complement, it would be 0 यूज नहीं हो रहा, 1 यूज नहीं हो रहा, 2 यूज नहीं हो रहा. That will be B complement. C is 1 3 5. 1 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 5 यूज हो रहा है. That means C complement में क्या होगा? 0 2 4 6, right? अब A यूनियन B अगर मैं कर देती हूं, तो A यूनियन B का क्या मतलब हो जाएगा? 0 1 2 3 4, आइदर इन ए, तो ए के तो ये आ गए, और इन बी और इन बोथ. बोथ किस में है? 3 4 बोथ में है, राइट? तो इसके साथ 5 6 भी आ जाएगा. दिस इज नथिंग बट द इंटायर सैंपल स्पेस फॉर दैट मैटर, बिकॉज सैंपल स्पेस 6 तक ही जा सकता है, राइट? ए यूनियन सी अगर मैं लेती हूं, सो 0 1 2 3 4 फ्रॉम ए. नाउ 1 3 5, 1 3 5 इन 6. सो 1 3 तो इसमें भी है, उसमें भी है, तो कॉमन हो गया. 5 is something which is in C but not in A, तो 5 भी आ जाएगा. This is not the entire sample space. Intersection, if we take off A and B, तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 3 and 4, तो वो आ गया इंटरसेक्शन में. इंटरसेक्शन ऑफ A and C we saw 1 3 1 3. अब अगर ऐसे ही हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी का कॉम्प्लीमेंट लेके देख लेते हैं. सो कॉम्प्लीमेंट आउटकम क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ आउटकम. तो ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट है, उसमें क्या क्या आ जाएगा? 0 1 इज देयर, सो 1 नहीं आएगा. 2 3 इज देयर, 3 नहीं आएगा. 4 5 6, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A intersection C. So that's how you will be using set theory in probability. By in a lot of cases, we will be trying to find out probability for or, and complement will be used somewhere. So set theory is very, very important for probability. Suppose we take a case, flip a coin until the first head occurs. ठीक है, इसमें हमने सैंपल स्पेस देखा था लास्ट टाइम सैंपल स्पेस हमने देखा था किस तरीके का आएगा. इनफाइनाइट सैंपल स्पेस चलता जाएगा, बिकॉज इट्स पॉसिबल दैट आई गेट हेड at the first roll itself, at the first flip. Maybe I get it in the second flip. So TH, H, TH, TTH, so on and so forth. Now the events that you can have in this kind of scenario could be, say, event A. Event A क्या कह रहा है? फर्स्ट में आ सकता है, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट में आया, सेकंड में आया, थर्ड में आया. सो A is the event, H, TH, TTH. B suppose is the event कि फर्स्ट में आया, थर्ड में आया, फिफ्थ में आया. So H, TTH, T, 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 4 times H. C is the event कि सेकंड में आया, फोर्थ में आया, सिक्स्थ में आया, so on and so forth. So, even में आया, B में odd में आया, and, first 3 में आया. A is that. Now, suppose we want to find out A complement in this. A complement क्या होगा? A complement will be an infinite set of all the outcomes that are not here. Sample space पे तो infinite outcomes है. कौन से outcomes यहाँ नहीं है? Starting with T, 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 H and moving on T, 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 H. क्योंकि यहाँ पर तो first 3 है ना. So, ये तो चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे. It's an infinite event. इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट होता, तो बी कॉम्प्लीमेंट में आपका सेकंड में आया, फोर्थ में आया से लेके आगे एवरीथिंग. इसी तरीके से सी में अगर होता, सी कॉम्प्लीमेंट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग. सी कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या होगा, बिकॉज इन सी इफ यू ऑब्जर्व द इवेंट आई हैव रिटन डॉट 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 डॉट, मतलब इट कीप्स ऑन गोइंग. सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ,
इवन में जितने भी आगे तक आते जाएंगे वो सारे के सारे केसेस. सो सी कॉम्प्लीमेंट विल बी द केस वेयर फर्स्ट में आ गया, थर्ड में आया, फिफ्थ में आया, and so on and so forth. Even this will be an infinite set because all the odd entries, all the odd as in odd position for head, that is, you're flipping the coin odd number of times, because C is where you're flipping the coin even number of times to get your first head. So C complement will be odd number of times. You can think about union, intersection here. If we take the union of A and B, A union B क्या होगा? A में हमारे पास है केस the first three, head, tail head, tail, tail head. In B, if you observe, what do you have? You have head, then tail, tail head, and then fifth, basically odd number of times, right? So after first three, you will have the fifth position for head, 5 flips for the first head, then 7, and so on and so forth. It will be an infinite set going on and on and on. Similarly, if you take the intersection would be simpler, क्योंकि intersection में क्या हो रहा है, सिर्फ कॉमन लेना है हमें. तो कॉमन चीजें मुझे क्या नजर आ रही है? कॉमन है हेड, कॉमन है टी हेड. सो देर आर जस्ट टू आउटकम्स, head and tail head, which are common. Okay, so that's how you incorporate set theory invariably in probability. अभी हमने probability नहीं निकाली है because I've not reached that concept yet. We're just creating the base to reach there. Now I want to come back to that question. The question that I started with A and A complement. Suppose I take A and A complement and I want to see what is the intersection of the two. Intersection means it's the set of all x's such that x is in A and x is in A complement with an and or x. It basically means it has to be in both. Can there be any x which is in both? Absolutely not. So this set is called phi or the null set. So we have empty set or null set. So there is a notion of empty set or null set. In this scenario, we call that the two sets or the two events are mutually exclusive or mutually disjoint. So in case A and B are two events and the intersection is phi, they don't have anything in common, then you say that they are mutually exclusive. Extremely important concept when you deal with questions in probability. Difference. Now, difference of A and B. If you have two sets, A and B, what is the difference? Difference of A and B is a set of all x's such that x is in A and x is not in B. We want everything that's in A, but not in B. So whenever it boils down to an event where you have A and B, there are two events. So what will you do to find A minus B? You have an event A and you have an event B. और आपको दिख रहा है कि इनमें कुछ कुछ कॉमन भी है बॉस. तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे A माइनस बी चाहिए तो ओनली A के लिए मैं क्या करूंगी, whatever there it has from B उसको हटा देंगे. So only A आ जाएगा, यानी कि A minus B for that matter. This is what is the difference. अब ये आप देख रहे हैं मैंने किस तरीके से ड्रॉ करके बनाया है. This is a Venn diagram. When you look at these sets diagrammatically to look for union, intersection, इसे कहते हैं Venn diagram. So I'll talk about Venn diagrams as well, but अभी बात करते हैं another very important law in sets, and that is De Morgan's law. De Morgan's law क्या कहता है?
डिमॉर्गन्स लॉ कहता है इट रिलेट्स यूनियन इंटरसेक्शन विद सेट्स or evens and their complements. So for any sets, say A1, A2 till AN, you have n sets. We have, if you take the union of all these, the union of all these will be equal to the intersection of the complements. एक मैं बात यहाँ पर और बोलना चाहूंगी that this intersection that you see here, इस तरीके से मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको मैं लिख सकती हूँ, I'll take the intersection common here, AI, where I goes from 1 to n. This is a notation that you use, okay, in probability and set theory. और ये जो यूनियन यहाँ दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये है यूनियन AI, where I goes from 1 to n. And that's intersection. Similarly, when you look at the intersection A1, intersection A2, so on and so forth till AN, that is equal to the union of the complements. A1 complement, union. A2 complement, union, so on and so forth till AN complement. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Union AI complement, I goes from 1 to n. And this here, my friends, is intersection AI. I goes from 1 to n. So that's how, these two sides are related. That's how union intersection are related when it comes to complement and original sense. It's called the De Morgan's law. कुछ प्रॉपर्टीज हैं सेट्स में जो हमेशा सेटिस्फाई होंगी. वो क्या है? कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिविटी ऐसा नहीं है कि हर ऑपरेशन के साथ है. कॉम्यूटेटिविटी ओनली फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन. मतलब ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए. आप निकाल के देखेंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए. आप निकाल के देखेंगे कोई फर्क नहीं आएगा. बट ऐसा नहीं है कि मैं माइनस में भी ये कर सकती हूँ. बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी. बी केयरफुल देयर. अब एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है? एसोसिएटिविटी का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से यूनियन ले, वो एक ही चीज आएगी. सो इट्स मोर, it's easier to understand when we take 3 sets. So if you have 3 sets, associativity would mean for union and intersection again. For union, associativity would mean that अगर मैं A union B लूं और फिर मैं उसका union C के साथ लूं, it will be same as अगर मैं A का union B union C के साथ लूं, या अगर मैं A union C कर दूं and then I unite it with B, it's gonna be the same thing. इसी तरीके से intersection के लिए A intersection B, now intersection with C is same as A intersection or with B intersection C. A intersection C intersection B. intersection कैसे भी आप लीजिए, it's gonna be the same thing. Okay. फिर आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए. यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए यू कैन से दैट A यूनियन B इंटरसेक्शन C. आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. आप क्या कह सकते हो कि आपने यूनियन कॉमन लिया हुआ. सो दिस इज नथिंग बट A यूनियन B का इंटरसेक्शन विद A यूनियन C. A यूनियन कॉमन आ गया. इसी तरीके से A इंटरसेक्शन B यूनियन C. A इंटरसेक्शन कॉमन आ गया. सो इट इज A इंटरसेक्शन B union of that with A intersection C. Very important law properties associated to sets. But ये कहीं ना कहीं पे ना probability पे भी manipulate करने में बहुत आसानी कर देती है when you are trying to look into events. So sometimes you are using all these things invariably. Okay, let me give you a visualized picture to sets. So जो भी चीजें हमने अभी तक करी हैं, हमने बात करी कॉम्प्लीमेंट की. वी स्पोक अबाउट कॉम्प्लीमेंट. सो सपोज दिस इज योर यूनिवर्सल सेट और द सैंपल स्पेस एंड दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एवरीथिंग दैट इज नॉट इन ए. सो यू कैन विजुअली सी ए कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस. इसी तरीके से इफ यू स्पोक अबाउट, इफ यू विश टू सी यूनियन, सो सपोज ए ये है, बी ये है, तो ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी इज everything in A as well as in B.
अब इसी तरीके से अगर मुझे इंटरसेक्शन देखना है तो इंटरसेक्शन क्या है बॉस? इफ दिस इज ए, दिस इज बी, द इंटरसेक्शन ऑफ द टू will be this area, this common area. इसी तरीके से और क्या हमने देखा था? इसी तरीके से हमने देखा a माइनस बी। a माइनस बी अगर आप देखना चाहेंगे तो a माइनस बी क्या है? इफ दिस इज a, दिस इज b, एज आई मेंशन देयर, a माइनस बी में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। सो ओनली a, all the x's that are in a but not in b. If you notice here, a minus b is basically the intersection of a with b complement. आप अगर देखो तो इट्स जस्ट द इंटरसेक्शन ऑफ ए विद बी कॉम्प्लीमेंट, या मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें, राइट? तो वो भी किया जा सकता है। सो क्लियरली विद दिस पिक्चर इटसेल्फ यू गेट टू नो दैट a minus b is very different from b minus a. Keep that in mind. So Venn diagrams are also something which are very very important. अगर मैं 3 सेट्स की बात करूं, let's quickly take that case also because वो होगा कहीं जगह आप A, B, C यूज करेंगे. So when you have A, B and C, a very common, let me tell you, a very common placement. So this is A, this is B, this is C. If that's the case, then ये रीजन आपको दिख रहा है जो, ये जो रीजन है आप ध्यान से देखिए, दिस इज कॉमन इन ऑल ए बी सी. दिस रीजन इज एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. I hope we are able to, recall everything that we need in set theory from probability point of view, and we will be able to move on to axioms of probability in the next lecture. Thank you very much.